नमस्ते सभी को स्वागत किया है मेरे चैनल से। और बात करेंगे आप लोगों के साथ Q3 का रिजल्ट के बारे में। और आप लोगों ने देखा जो Q3 रिजल्ट 2026 एक्सिस बैंक, L&T फाइनेंस, मारुति सुजुकी, वोडाफोन आइडिया और मेनी अदर्स कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया कंपनी Q3 का रिजल्ट। और आप लोगों को साथ बात करेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम कंपनीज टू डिक्लेयर अर्निंग नेक्स्ट वीक कितना होगा, और एक्सिस बैंक, लार्सन टूर्बो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वोडाफोन आइडिया, मारुति सुजुकी और ITC बाजाज ऑटो और amongst many companies are discussed कर दिया जो कंपनी रिजल्ट और Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 नेक्स्ट वीक। और Q3 रिजल्ट 2026 the market will enter the third week or Q3 earning weeks. Around 500 companies schedules to release their financial results or for the Qatar in the December 31, 2025 in the coming week. Axis Bank, Larsen Turbo, Marat Electronics, Vodafone Idea or Paytm 197 or companies to release Q3 result or financial year 2026 next week. According to market expert, the ongoing Q3 results earnings session will continue to drive the Indian stock market next week. Or however, expert the overall statements and cases the which the Q3 earnings or the session still under a stock specific movement are expected to remain prominent, and overall statement is likely to stay cautious and shaped by and global developments, currency trends, and earning outcome with selective opportunity emerging in the statements and supported by the resilience or demand, says the Bindor Nair, head of the research Geojit Investment Limited. एक्सिस बैंक Q3 रिजल्ट प्रीव्यू। और आप लोगों के साथ हम प्रीव्यू करेंगे जो एक्सिस बैंक का Q3 रिजल्ट इस बारे में। और आप लोगों ने देखा जो ब्रोकरेज फार्म्स इलारा कैपिटल एक्सपेक्टेड बेटर हुआ कटर टू कटर और ग्रोथ इन द लोन बैक बाते सॉफ्टवेयर डिपॉजिट एंड ग्रोथ NIMs are likely to drop driven by the loan mix change and will the impact of largely the Q4 or apex the trends and the would lend the supported to core or POP and growth. Minor the assist the qualities or Q3 is seasonal soft cutter on agri slippage and the trajectory of technical। और अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बाजाज ऑटो Q3 का रिजल्ट के प्रीव्यू के बारे में। ब्रोकरेज फ्रॉम एक्सिस सिक्योरिटीज एंटिसिपेट रेवेन्यू टू रेज बाय 18% ईयर ऑन ईयर। जो रेवेन्यू हो रहा है बाजाज ऑटो का Q3 रिजल्ट इस बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इंक्रीज इन द वॉल्यूम्स एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ एंड हायर एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज द फेजिबल प्राइस ओवर द पास्ट ईयर। और ITC Q3 रिजल्ट का प्रीव्यू करेंगे। और अभी आप लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू द इलोरा कैपिटल ITC और रेवेन्यू ग्रोथ लाइकली आप लोगों ने देखा रेवेन्यू ग्रोथ लाइकली to be 7% lead by 5%. By 5%, cigarette volumes the growth, and however the recent tax increase by the government will remain on the overhangs, and the brokerage firm further expect the FMCG gain to post 7.2% YOY and 0.1% in growth in EBITDA for the December Qatar financial year 2026.